लेट्स नाउ गो टू कुंभ एंड महाकुंभ, है ना। रिसेंटली अब जनवरी में होने वाला है, माघ में कुंभ मेला होने वाला है। लेट्स अंडरस्टैंड सम थिंग्स अबाउट कुंभ। व्हाट इज कुंभ? तो कुंभ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट pilgrimage and festival of Hindus. लास्ट टाइम जब कुंभ हुआ था उसमें 5 करोड़ पीपल पार्टिसिपेटेड इन अ सिंगल डे, दैट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। कई कंट्रीज में 5 करोड़ लोग हैं नहीं, यहाँ एक दिन में इलाहाबाद में प्रयागराज में एक दिन में 5 करोड़ पीपल हैड वॉश्ड देयर पाप्स, वॉश्ड देयर सिंस, प्रायश्चित किया था। डुबकी लगाने का मतलब क्या होता है? अपने गंगा में डुबकी लगा के अपने पापों को धो रहे। कितने लोग गए प्रयागराज में? कितने लोग ने डुबकी लगाई? किसी ने नहीं। अभी पाप काफी नहीं है, अभी पापों का घड़ा भरेगा तो नेक्स्ट ईयर जाओगे। क्यों? क्या पाप कर दोगे तब तक भाई? ऐसा फैमिली जा रही है तो नेक्स्ट ईयर जाए, कोई बात नहीं। तो वी नो दोस थिंग्स अबाउट कुंभ, ये जनरल चीजें हमें पता है। नाउ कुंभ इज हेल्ड ऑन द 4 रिवर बैंक्स। वन इज प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती जिसे हम संगम बोलते हैं वहां पे। अदर इज हरिद्वार। नेक्स्ट ईयर मींस यू आर गोइंग इन जनवरी, अभी तो अभी जा रहे हो, इसी कुंभ में जा रहे हो। पाप धोने के बाद प्रीलिम्स का एग्जाम दोगे। चलो ठीक है। तो देयर आर 4 प्लेसेस वेयर कुंभ इज हेल्ड। वन इज व्हाट? प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती जो संगम में होता है। अदर इज हरिद्वार, गंगा रिवर के बैंक्स पे। नासिक ऑन गोदावरी रिवर एंड उज्जैन ऑन शिप्रा। These are the 4 places. तो 12 years का साइकिल होता है। Every 12 years का साइकिल, that every 3 year it would be held at one place. ऐसा नहीं है कि उस टाइम बाकी प्लेसेस में नहीं, बट one of the 4 places are identified. तो हर 12 साल में the कुंभ will primarily happen in प्रयागराज, that is known as Maha Kumbh. That is known as Maha Kumbh. जो अभी 2025 में होने वाला है, क्या होने वाला है? Maha Kumbh. अब why this 12-year cycle? Because it follows the cycle of Jupiter, Brihaspati. Earth in 365 days is able to complete one revolution around Sun. It takes 12 years. जब अर्थ 12 बार घूम जाता है अराउंड, नॉट रोटेट, रिवॉल्व, उस टाइम में जुपिटर एक बार घूम। एंड कुंभ मेला में द हिंदू ट्रेडिशन में वी हैव बीन यूजिंग बृहस्पति एज एन इंडिकेटर फॉर कब कुंभ मेला होगा, कब नहीं होगा। नाउ तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस, बट रिसेंटली it has also started in a 5th place known as Bansberia Tribeni Sangam, West Bengal, where Hooghly and Saraswati river meet. This is the difference, where Hooghly and Saraswati river meet. It is said that here it used to happen hundreds of years ago, but it was stopped around 700 years ago, and it has been revived again in 2022. Now, what do we do here? So primarily, it is the ritual dip in water. माँ गंगा में अपने पापों को धोना, या माँ शिप्रा में, माँ नर्मदा में, और नर्मदा भी है ना, गोदावरी, आई एम सॉरी, नॉट सॉरी, गोदावरी एंड माँ शिप्रा में अपने पापों को धुले. दिस इज द प्राइमरी activity that happens, but along with it we'll see a lot of commercial activities happening, a lot of other religious activities also happening, है ना. वहां पे और भी बहुत सारी चीजें होती है that forms part of India's culture. Now ये करना, ritual dip is what? It's a form of प्रायश्चित, atonement, penance, restorative action for past mistakes, and it cleanses the sin of people. कुंभ मेला rotates among the 4 sacred cities, and ये वाली चीज हमने समझा दी है. Let's understand history. हिस्ट्री से पहले हिंदू माइथोलॉजी समझते हैं. What does Hindu mythology say about these 4 places? There's a concept of समुद्र मंथन, जहां पे देव और दानव वर फाइटिंग फॉर अमृत, है ना. से हम यहाँ पे बोल रहे हैं समुद्र मंथन को हम बोल रहे हैं चर्निंग ऑफ द सी, एंड दे वर फाइटिंग फॉर अमृत का मटका जो था, पॉट ऑफ अमृत, which we in English are calling nectar of immortality. After this amrit was achieved, it is believed that it spilled at, mythology है, प्लीज समझो,
तो इस तरह के एस्पेक्ट्स रहेंगे माइथोलॉजी. इट स्पिल्ड एट दीस 4 प्लेसेस. तो इन 4 प्लेसेस पे क्या गिरा? थोड़ा अमृत गिरा है. इसीलिए हम जाके वहां डुबकी लगाते हैं ताकि जो अमृत वहां गिरा है उसका हमें फायदा. दिस इज mythology. But if you go to history, if you look at historical accounts, then there are early forms of pilgrimages provided during Mauryan period as well as in Gupta period, where people visited some river banks for pilgrimage. It was not called Kumbh as such. The term Kumbh was not used, but these kind of things are there. In fact, the credit of formalizing Kumbh Mela is generally given to Adi Shankaracharya or Adi Shankar. He was a 8th century Hindu philosopher, and he is given the credit for formalizing what? This thing. So he basically was taking efforts to start a major Hindu gathering for philosophical discussion, as he was a philosopher. And in the process, it is believed that he brought people together in for Kumbh Mela. But again, it is believed because historical evidence related to this are also not there. If you want to look at literary evidence, then as such Kumbh Mela only started in 19th century. The term Kumbh Mela only started getting used in 19th century. But there were various Magh Mela in Hinduism happening in different parts of the country for very long time. Uske evidence, they were not called Kumbh, Magh Mela. Magh is the month, this January वाला जो month होता है उसको बोल रहे हैं. वो उस मेले के एविडेंस है, and वही मेले eventually may have become Kumbh Mela. According to Kama MacLean, it was the British rule, the socio-political development during the colonial rule, and the reaction to Orientalism and eventually the 1857 rebellion, which led to rebranding and remobilization of these Magh Mela as Kumbh Melas. जो Magh Mela कई सेंचुरी से चले आ रहे थे, it was rebranded during British rule because हम पे क्या थोपा जा रहा था? Outside way of life. So it was a reaction from our side to reinitiate our cultural traditions, to promote Magh Mela. और उसको historically आप देखोगे तो it has been we started calling it Kumbh only from 19th century. कुंभ एक्चुअली इसके बहुत सारे मीनिंग है. एक तो कुंभ का मतलब है वो कुम्हार एक डिवाइस जो बना रहा है जिसमें पानी वगैरह रखा जाता है, ये वाला एस्पेक्ट. अब हाउ द नेम केम उसके भी बहुत सारी थ्योरीज है, बट हमें उन सब में नहीं जाना है. Some other things that you should know about Kumbh is Kumbh Mela has also been inscribed in UNESCO's representative list of intangible cultural heritage of humanity. तो देखो यूनेस्को के कल्चरल हेरिटेज साइट्स होते हैं, बट दोज आर फिजिकल हेरिटेज साइट. तो आपको आपने पढ़ा होगा कि ताजमहल इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. इट्स अ कल्चरल हेरिटेज साइट. ऐसे यूनेस्को के नेचुरल हेरिटेज साइट्स. बट देन देयर आर सम एक्टिविटीज व्हिच आर इंटेंजिबल. आप ताजमहल देख सकते हो, बट अब कुंभ मेला देख सकते हो, मतलब कुंभ मेला इज एन एक्टिविटी. इफ पीपल स्टॉप डूइंग इट, इट एंड्स. If people stop going to Taj Mahal, still Taj Mahal would be there. These activities are called intangible heritages. These activities are called intangible heritage. तो यूनेस्को का एक लिस्ट है जिसमें उसने वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट इंटेंजिबल हेरिटेजेस को लिस्ट किया है. दैट इज नोन एज यूनेस्कोस रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. और उसमें व्हाट हैज बीन इंक्लूडेड? कुंभ हैज आल्सो बीन इंक्लूडेड. हम अभी प्रीलिम्स के टाइम आएंगे तो विल लिस्ट डाउन ऑल द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. इसमें बहुत दूसरे जैसे नवरोज एक फेस्टिवल है, इट इज आल्सो लिस्टेड हियर. चैंटिंग ऑफ वैदिक मंत्र, that is also intangible cultural heritage that is listed in the UNESCO's intangible cultural heritage list. It is something that has been listed in recently. I think it was listed in 2017. Then एक record भी है इसका. On 4th of February 2019, Kumbh Mela witnessed the largest public gathering of humans ever recorded in one day. 5 crore people were there. Where? In Prayagraj in 2019, and this is also a world record. 5 crore people are
That's huge. Why was it in news recently? It was in news recently because एक नया district बना दिया गया. So earlier it was Prayagraj district in which Kumbh Mela was held, but now Uttar Pradesh declares Maha Kumbh area as a new district. Why? For better management. देखो नया डिस्ट्रिक्ट बनेगा तो नए नए ऑफिसर्स who are supposed to be for there will be district magistrate, additional district magistrate, those kind of things would be there जो specifically उस डिस्ट्रिक्ट के लिए है, and thus it would lead to better organization, better administration of Kumbh Mela, not only today but in future also. So you will see here in the Maha Kumbh Mela district area. So Maha Kumbh Mela district is the name, or Maha Kumbh Mela area is the name. The Mela Adhikari Kumbh Mela Prayagraj will have powers of executive magistrate and additional district magistrate. Mela Adhikari has been given powers of executive magistrate, additional district magistrate, and such other things have been done. तो प्री में ये पूछा जा सकता है कि ये अभी न्यूज में था, ये डिस्ट्रिक्ट बना है, कहाँ बना है, क्यों बना है, कैसे बना है. You should have clarity on